Hello all, very good evening. I hope I am proper visual to you guys. Okay, very welcome to the session, and today we are going to see what are the delete, drop and truncate, and when to use which. And this is also going to like a very useful topic in term of like interviews, in term of um, like a everyday life work, right? So this is the widely asked by interviewer how to like when to use which, what are the difference between the delete versus like a drop and truncate, and when to use which. And the many candidate I saw, they are not able to like explain these things in a better way. So we should need to like understand this in a better way. So for that purpose I have prepared this class for today separately. So before we will start, please confirm in the chat that my voice and I am and my everything is proper visual to you guys, so that we can start. Okay, I'm waiting for response. Once you guys confirm, then we will start our session. So as I saw, many people are not able to explain the things better way in an interview. So I have that properly designed this. And before the class, I would like to introduce to you guys that this class is going to happen in a like a both languages. First I try to explain in English and again in Hindi. So because in the beginning of the class I have like mentioned that this is class is going to like happen in the both language. I am considering that this is the English language because there are some people who not like understand the things proper in English, and some are not understand the things in proper in the English. So that's purpose I am just going to start this class in a both language, right? सो यहाँ तक सबको क्लियर है? जहाँ तक अभी तक हमने बहुत अच्छे से टॉपिक कवर कर चुके हैं यहाँ पे, जिसमें हमने देखा था पिछले क्लास में, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें यूज़ करी थी, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि डेटा टाइप क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, डेटा क्या होता है, एसक्यूएल की यूज़ क्यों करते हैं हम, डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है, और डीबीएमएस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. सो वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स टिल हेयर. So basically we are able to like build our like foundation till here. So today we are going to study what are the delete, drop and truncate. So before we begin, just confirm in the chat so that we can start, if my voice and everything is clear to you guys. Okay, so I believe my voice and everything is visible to you guys, and I am just going to turn off my camera and just going to start our today's agenda. So okay, so now let's begin. Okay, so guys, do practice before you come in the session. Just do practice, because without practice nothing is going to possible, right? So you need to do practice, right? So today what we are going to cover, we are just going to see what are the delete, truncate and drop. Okay, so drop versus truncate versus delete we are going to see today. Okay, so before we begin I just want to let you guys that I have prepared um, some better thing for you guys, so everything is going to clear. Okay, no worry about. I'm just going to make the things very simple so that everyone can grab the things, right? So यहाँ तक आप तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब अभी तक जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, किसी को कोई चैलेंज नहीं आ रहा है. अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर बता दीजिए, जिससे कि जो है हम अपकमिंग सेशन में जब भी हमें जो है डाउट क्लियर की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम जो है अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, राइट? सो यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया है अभी तक, उम्मीद करता हूँ, जो एसक्यूएल की सीरीज़ चल रही है, ठीक है. सो मैं चलता हूँ अपना जो है एसक्यूएल ऑन करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट अभी फ़िलहाल के लिए. एंड बिफोर वी बिगिन वी जस्ट नीड टू क्रिएट आवर वन टेबल दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट टेबल. सो फॉर दैट पर्पज़ I am just going to create a table. Create. So I believe everyone remembers the create command, right? So create table. Let's create our table and try to do one thing. Try to do practice along with me, right? So it's going to like a proper learning structure, right? So let's begin. So let's create our first table. So I am just going to use the create command and table, and we just want to create one table that is called the test table for today class purpose. And I am just going to
enter some column here. So first column I would like to add here id, and I also want to use here uh, type of integer, and again another column is going to name. And I believe till now everyone are able to like understand what are the things of data type and everything, right? So we have do these things in past videos also, right? So till here we are able to like write this code, and I am just going to hit the enter, and we are able to like create our table. And just I want to insert some data. For that purpose I am just going to use insert command. So here we are going to like use insert command. तो यहाँ पे हम लोग insert करते हैं कुछ डेटा यहाँ पे। तो अभी तक हमने कॉलम बना टेबल बना लिया है, अब उसमें कॉलम भी हमने बना लिया है, डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया है, मतलब प्रॉपर टेबल का स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। उसमें जो है थोड़ा सा डेटा हम ऐड कर देते हैं तो ठीक है। सो फॉर डैट पर्पज़ हमें क्या यूज़ करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, टेस्ट टेबल। ये हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है टेस्ट टेबल, और यहाँ पे हम जा रहे हैं कुछ डेटा इंटर करने, जैसे कि टेस्ट टेबल, और टेबल का नाम जो है ओके। सो लेट्स इंसर्ट like id, we have id column, and another one we have name, and we just want to enter some value like this values, and here we are just going to enter some data. So for column I am just going to add one for id, and name is going to always use single quote, right? I am just going to use Rahul, and comma, and let's fill here, and next I am just going to enter the name Neha, and to id. Again third value I am just going to enter the data like third, and Amit like this, and one more data which is going to id is 5 and name is Sarah like this, and just need to select all the things and run. Okay, so it's going to execute it. Okay, so now let's check our data is inserted or not. Let's, for that purpose we are just going to use the command that is called select star from which table is it's going to like a test table, right? So till here I think everyone are able to do the things. Okay, so we are able to like create our table, we are able to like insert some data as well here till here. Okay, so I'm just going to copy this and paste in the chat box so that everyone are able to like copy this from here directly. So for that purpose I'm just going to use 1 minute guys. So I'm just going to paste it in the chat. Okay, so just copy it and start doing practice along with me. Okay, so now I'm just going to turn on everything, and I'm just going to share my screen. So till here we are able to like insert our data, and we are able to create our table as well, right? So if yes, till here everyone follow the same, so just confirm in a chat, otherwise we can start. Okay, so let's understand the delete before we go deeper. So let's understand what are the like a delete command. So what is delete? So what is delete actually? So let's understand. So
Actually, delete is like used like when we need to like remove rows from a table. So in this case, we use a delete command. Okay. So delete is going to useful when we want to like delete some data from the table. So it does not like remove the table structure like a columns and the constants. It's only like remove the data. Okay, with some condition. So we will see in we have seen in like our previous session how to like use delete. So but here till now here I am also going to like revise this topic as well, so that everything is going to clear to you guys. Okay, so syntax is going to like to something like that. So this is going to syntax like delete from table name, table name, table name, table, table name, and with where condition, where we need to like put some condition. Okay, so this is going to our syntax for delete. Okay, so now let's take some example one, example number one. So suppose we want to like delete some specific data. Example one, suppose we want to delete some specific data, like we want to remove this Rahul from the table. So for that purpose we need to insert, suppose we want to delete the some specific raw. So for that purpose we are just going to use delete command. How to use, let's do it practical. So for that purpose we just need to write the command, and that is called delete from table name, which is going to our test table. And from here we have one option that is called the where under the where we are just going to call the that column which is in this. Okay, and second way is also present here. So by using, so here you can see one row is affected, and again if you see the data from the table, so you will find that Rahul is not there, right? So अगर आप दोबारा जाके टेबल चेक करते हैं तो आपको मिलेगा कि राहुल वहाँ पे नहीं है, और हम कुछ इस तरीके से जो है कुछ स्पेसिफिक डेटा को जो है डिलीट कर पा रहे हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ डिलीट, एंड डिलीट इज ऑलवेज कम विद द वेयर कंडीशन, with some condition, right? So keep in mind guys, and I think this is going to useful, and delete is actually very useful topic. So that's purpose I am just going to explain this. So here you will you are like able to see like a delete is gone from here. Sorry, Rahul is gone from here, right? So we are able to delete one specific row. So what if we want to like a delete, what if we want to like a delete all the rows. So for that purpose we need to like a use this function called like we need to use the delete, and from table which is going to our test table, and when we are going to like delete this, so what it does, it's going to like delete all the things. But whenever you are going to like call this table again, from here you if you want to check the data, so here you will see that there is nothing data present, but structure of the table and everything is presented here, right? So this is the power of delete. सो फॉर डैट पर्पज़ वी यूज़ डिलीट, जब हमको कोई अपना जो है स्ट्रक्चर सेम रखना है बट उसके अंदर का डेटा निकालना है, तो इस पर्पज़ के लिए हम डिलीट यूज़ करते हैं. बट मेनली हम सारा डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रीज़न है ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि हम बाद में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होता है ऑप्टिमाइजेशन का. क्योंकि जब हम डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ चंक्स में डेटा नहीं होता, वहाँ पे डेटा जो है बहुत बल्क में होता है, राइट? सो उस पर्पज़ के लिए हमें जो है डिलीट का यूज़ नहीं करते हैं. जब हम पूरे डेटा को डिलीट करना होगा किसी टेबल से, तो उस समय हम जो है यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड ट्रंकेट का. ओके, सो
So keep in mind that important behavior of delete you should have to like keep in mind. So what are the important behavior? So important behavior of delete is going to let me write here in a chat. Okay, so let me write here. So so keep in mind that this is going to be very important. So whenever you like a delete anything, whenever to going to like a use, so for that purpose you should need to in a delete always use where clause, always use where clause. Okay, and second we should need to keep in mind that, so okay, so you need to like keep in mind, and for like don't like use, don't use delete from table, delete from table, because it's going to impact our optimization. Maybe in our table there are a lot of data present there, so it's going to like a cases the um, slowness issue or something like that. So for that purpose also we are not using delete to delete all our table. Okay, so because of these things we need to keep in mind. Okay, so delete can be rollback actually. Okay, so data actually delete, when we use delete, and delete is going to like a rollback, we can roll back our data. Okay, so for that purpose also we use delete. So real world use cases, so delete going to like a delete the specific raw data. So for that purpose we use delete. So like we need to like remove one employee data, for that purpose we are going to use delete. We need to like delete any cancelled order, if you're talking the term of the any um, like e-commerce companies or any like a food delivery company like a Zomato or anything. So if there are some order is cancelled, so we do if we not needed longer that column, so for that purpose we are just need to remove that cancelled order. For that purpose we also going to use our delete clause. Okay, सो डिलीट हम जो है किसी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना हो तो यूज़ करते हैं, राइट. सो सपोज वी वांट टू लाइक डिलीट एनी रॉन्ग ट्रांजेक्शन, इस दिस केस में भी हम जो है डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं. तो टिल हेयर सबको समझ में आ रहा होगा डिलीट क्या होता है. डिलीट क्या होता है, जैसे कि उस स्पेसिफिक डेटा को हमें विद कुछ कंडीशन डिलीट करना हो, तो उस केस में हम जो है डिलीट का यूज करते हैं, राइट. So now let's talk about the truncate. What are the truncate actually here? So truncate is going to truncate. So truncate is what? So what is truncate? So truncate remove all the data from a table. Okay. So it is also going to like a delete. Sorry, we can use these things. Remove all the rows from the table. So truncate is useful when we need to like delete our all the data. So in this case we use truncate. It is faster than delete. Okay, because it's not going to like a delete row by row, it's just going to delete in a one time. Here no nothing is happening behind, because it's not going to like read all the data by run row by row. So whenever things are going to like run by row, so it's a time consuming, right. Because it's need to like a delete need to like a go run by run, and based on some condition need to delete the data. So for that purpose we use our truncate here, right. So till here I think we are able to understand what are the truncate, but it did not actually allow where clause. Here we cannot use the like not allow the where clause on the truncate. So keep in mind these things as well, and also it is faster than delete.
वाई आई हैव जस्ट एक्सप्लेंड यू, बिकॉज क्योंकि क्या होता है जब हम डिलीट का यूज़ करते हैं तो वो रो बाई रो जाता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा को डिलीट कर रहा होता है बैकएंड में। वो रो बाई रो जाएगा, वहाँ देखेगा ये डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर अगले रो में जाएगा, फिर अगले रो में जाएगा, तो रो बाई रो उसको रीड करेगा, तो उसमें उसको टाइम लगेगा, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है जब हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं इस तरीके से ट्रंकेट को, तो ये क्या करता है, ये उस चीज़ को रिमूव कर देता है, क्योंकि ये एक ही बार में जाता है, एक पेज को डिलीट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स यू शुड नीड टू लाइक कीप इन योर माइंड, ओके। सो if we talk about the syntax, so syntax is going to like very simple, which is going to like a very simple like this. We need to just type truncate table and table name, right, table name. So this is going to very simple syntax here. So these are the major things you should need to keep in mind. So let's understand with the some example. So um, okay, so let's understand with some example. So suppose we need to insert some data again. So I'm just going to execute this row only. I'm just going to insert some data here, and when I'm going to see our data like this, so we are able to find that there are some data present here, right? So what happened when we use truncate, so we can use like a truncate our table, truncate table and our table name, which is going to like a test truncate. Okay, so what we need to do, we need to delete our data like this, truncate table, our table is going to test table, okay. And when we are going to just do, so here you can see started execution query at line 38 and command completed successfully, total execution time is 0000010, right? So this is the power of truncate. And again, you if you want to check the data, so nothing is here, but your like a structure and data type and everything is like remain the same. You can again insert data by using the insert into command. So this is the purpose we use truncate as well, right? So till here everything is going to clear to you guys, right? So now let's understand with one more topic, that is so truncate is actually fail whenever we have like a data in a relationship like a uh, like a, uh, primary and foreign की रिलेशनशिप। सो ट्रंकेट वहाँ फेल हो जाएगा जहाँ पे जो है हमारे पास डेटा जो है कुछ प्राइमरी की और फॉरेन की के रूप में प्रेजेंट होता है, लाइक हमारे पास टेबल है जैसे पेरेंट और चाइल्ड। सो इस केस में हमारा ट्रंकेट डायरेक्टली यूज नहीं होता है, वाइडली वी आर नॉट गोइंग टू यूज ट्रंकेट। सो हम क्या करते हैं इन दिस केस वी जस्ट गोइंग टू create one more thing. So we are just going to like try like when we are going to like found these things. So for that purpose we just need to like delete the parent data first and again the child. So but this is also not going to work, because the until we have a relationship established. So how to use delete how to delete that data if this is the case. So for that purpose we use something called a child first and parent later. So which table is connected with the parent table, so we are just going to do this. Okay, so
otherwise we can be what we can do, we can do our safer version is going to like a use always use alter command, like alter that table and delete that relationship. Okay, that relationship, and then you are able to delete our data. Okay, so by doing these things you are able to do the same. so क्या होता है अगर मान लो हमारे पास जो है डेटा में जो है जो है इस रिलेशनशिप में है कि पेरेंट और चाइल्ड के रूप में, तो उसको ना तो हम पहले पेरेंट को डिलीट कर सकते हैं, ना तो चाइल्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में उस रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास फॉरेन की रिलेशनशिप है उस कॉलम को जाके हम, या फिर उस कांस्टेंट को हम जो है अल्टर कर देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद वी आर एबल टू डिलीट आवर डेटा इन दिस पर्पज ऑल्सो, राइट। ओके, so till here everything is going to clear to you guys. So now let's move on our next topic, which is going to very useful, and that is going to our drop. So drop is always, so now let's understand what are the drop. So drop is useful when we need to like a delete remove all the things like a constant, table, structure and everything. So drop always like a remove the table, structure, data, constant, indexes, everything is going to like a deleted. Okay, so it's going to like a remove the everything. So everything remove. Okay, so this is going to useful when we need to like remove everything from the table. Okay, so in this case we use our drop. So how to like what are the syntax, like how to use drop command actually. So it's going to like very simple, like this: drop and table name, table name, just like a truncate. But it's not going to like remain the your table structure and constant or indexes or anything, and it's just going to like a drop that particular things in like a in a in a fasted way, and it is like a very dangerous. So drop क्या करता है, सब कुछ जाके एक साथ जो है डिलीट कर देता है। इसमें ना आपका टेबल स्ट्रक्चर बचेगा, ना आपका इसमें डेटा टाइप बचेगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, सब कुछ जाके डिलीट कर देगा। सो व्हाट हैपन आफ्टर ड्रॉप, इफ़ यू लाइक डिलीट एनी टेबल, सो like this, if suppose I want to delete this, if we want to like a drop our test table, and we are going to like a drop table, and we can also drop our database as well, and drop table, and table name is test table, and when we are going to like execute this, so it is just going to delete all the things. And if you are going to like call that table again, so it shows error to you. Why? Because this table is not presented here. You can see invalid object name test table here. So it's delete the permanently that table with structure, with everything, right? So it's going to destroy all the things. So this is very dangerous actually. Okay, so actually drop cannot be undone easily. It's going to like a very like a big thing, because whenever you use drop you should need to check and proper sure if you want to drop that things. Okay, so unless like any backup or store or presented, so before this you don't need to like delete any table. सो डिलीट करने से पहले आपको उस टेबल का बैकअप रिस्टोर करके रखना चाहिए। ठीक है, सो ड्रॉप जो है हमेशा एक डेंजर होता है। जैसे ही आपने देखा, जैसे हमने ड्रॉप लगाया, यहाँ से टेस्ट टेबल का सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ से। ठीक है, सो ये एक विध्वंसक के रूप में है, जो कि जाके सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ना तो डेटा टाइप छोड़ेगा, ना तो
लाइक टेबल का स्ट्रक्चर छोड़ेगा, मतलब टेबल छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ डिलीट कर देगा। और आप ड्रॉप का यूज़ करके चाहे आप डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। So here for what you need to change, here you just need to change this like a database and database name, right, like this, okay. So drop is always dangerous, so before you are going to like a drop anything, so you should need to double check, okay. So ड्रॉप जो है इतना ईजिली से आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, ओके। सो ड्रॉप इज़ यूज व्हेन लाइक अ रिमूविंग अनयूज्ड टेबल, लाइक अ रिमूविंग टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट टेबल, like deleting old project schema. In this case actually we use our drop command, okay. So ड्रॉप एक्चुअली हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं होती, उसको हमको परमानेंट डिलीट करना होता है, लेकिन हम एक सेफर खेलते हैं, उससे पहले हम उसका जो है एक बैकअप बना के रखते हैं कि क्या भरोसा आगे आने वाले फ्यूचर में जो है हमें ज़रूरत पड़ जाए या फिर मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ जाए कि उस टेबल की या फिर उस डेटाबेस की, ओके। सो दिस इज़ द थिंग्स यू शुड नीड टू कीप इन माइंड. So let's understand something like a full comparison of table, like what are the delete, drop and truncate, because this is very useful topic, okay. So this is not going to like a very small things. This is going to like a very useful topic, and many people got the rejection in the interview, okay. So keep in mind this is going to very useful, okay. So delete versus truncate versus drop. Let's understand what is this. So delete is going to like remove the selected rows, and truncate going to remove the all row. Is faster than, it is faster than delete. But when we use drop, so it's going to like remove the table completely, okay. Even you can delete your database as well by using the remove command. So this is going to like destroy everything, okay. Okay, so now let's understand what are the delete versus truncate versus drop comparison. If we talk about, so delete is always come with a where condition and identity not reset. So this is one new term here, but don't worry, I'll explain it later on. So what are the truncate here? So truncate is going to use without where condition because it's just going to delete all the data, but it's like a remain the your table structure and everything, okay. And drop is like always useful like to delete all the data, and it's going to like improve like remove the everything from your table, like a table structure and टेबल इटसेल्फ, ओके। वो टेबल को भी डिलीट करेगा और आपके टेबल स्ट्रक्चर को भी डिलीट करेगा। सो डिलीट क्या करता है, डिलीट हमेशा वेयर कंडीशन के साथ आता है, जिसमें आइडेंटिटी जो है वो रीसेट नहीं होती, लेकिन ट्रंकेट आता है तो वो वेयर कंडीशन वहाँ पे हमको नहीं लगता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी वहाँ पे रीसेट हो जाती है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है ड्रॉप का। तो ड्रॉप ऑलवेज हमको क्या करना चाहिए, जब भी हम ड्रॉप यूज़ करें एक बार हम डबल चेक ज़रूर करें कि हम कि ड्रॉप का जो है जिस टेबल या फिर डेटाबेस को हम ड्रॉप करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर बैकअप या एवरीथिंग इज हमने ले रखा है कि नहीं, या फिर उसका कोई यूज़ तो नहीं है, ठीक है। कि गलती से कुछ भी ड्रॉप मत कर देना, नहीं तो ये जो है रियल वर्ल्ड में बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है। सो क्योंकि जब कोई चीज़ ड्रॉप हो जाएगा फिर उसका बैक ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है, ओके। So truncate is always faster than delete, okay. So keep in mind these things also. क्यों ऐसा होता क्यों है, इफ़ यू थिंक लाइक डैट वाई ट्रंकेट इज फास्टर देन डिलीट। अगर आपको सपोज बोला जाए कि आप यहाँ से निकलो, आप यहाँ खड़े हो, एक यहाँ से खड़ा है और जाना है यहाँ पे बी, ओके। सो यहाँ से डिलीट निकलता है एक बार, और इसको बोला जाता है कि ठीक है यहाँ से जो है थोड़ा सब्ज़ी ले लेना, यहाँ से थोड़ा फ्रूट ले लेना, यहाँ पे जो है एक पर्सन जो है वो मेडिकल में एडमिट है, वहाँ चले जाना, यहाँ आना, यहाँ से कुछ जो है और सामान ले लेना। इस तरीके से बीच में बहुत सारा चीज़ कंडीशन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जाएगा वन बाय वन यहाँ से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो इसको जो है बार बार आने जाने में टाइम लग जाएगी, ठीक है। तो डिलीट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा रखा है कि आपको जो है इस तरीके से सिर्फ यहाँ से लेना है,
लेकिन फिर भी ये जाएगा ऐसे 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 ऐसे। जब वेयर कंडीशन लगा दिए, वेयर कंडीशन आप लगा दिए यहाँ पे, तब भी ये जाएगा वन बाय वन, वो ढूंढेगा कहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ से जाके वो चीज़ लेगा, फिर जो है यहाँ तक आएगा। तो उसको जो है टाइम लग जाएगा। ओके। अब ड्रॉप क्या करेगा जब आप, सॉरी ट्रंकेट क्या करेगा जब आप ट्रंकेट यूज कर रहे हैं, तो ट्रंकेट को जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है ट्रंकेट को, तो वो क्या करेगा, इन दिस केस ट्रंकेट क्या करने वाला है, ट्रंकेट जाएगा यहाँ से निकला ट्रंकेट और सीधा यहाँ पे जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं, तो जाएगा सीधा से सीधा जाएगा, तो इसको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ऑलवेज दिस इज द केस, ट्रंकेट इज ऑलवेज faster than delete. Okay, so keep in this mind. I believe this example is going to very useful and I am able to make you guys understand. Okay, so truncate क्या करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा ए से बी तक, तो उसको टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। जब आप कहीं से निकलोगे सीधा सीधा जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप रियल वर्ल्ड देखोगे, जैसे मान लो कोई ट्रेन है, एक जो है लोकल ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन है, एक कोई आपकी राजधानी एक्सप्रेस है या वंदे भारत है, समथिंग लाइक डेट। सो अब लोकल ट्रेन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आना है, उसको यहाँ से यहाँ तक आना है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, बीच में बहुत सारे स्टेशन है, बहुत सारे स्टेशन है। अब ये यहाँ रुकते हुए आएगा एक ही जगह, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में यहाँ से यहाँ तक। बट ये राजस्थानी है, इसको यहाँ तक आना है राजधानी एक्सप्रेस को। अब ये क्या करेगी, जब यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी तो डायरेक्ट निकलेगी। हो सकता है यहाँ पे काल स्टेशन होता है, बट इन ट्रंकेट के वे में अगर हम समझें तो इसको यहाँ से यहाँ तक आना है डायरेक्ट, तो ये क्या करेगी, यहाँ से निकलेगी और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंट ऑफ डिलीट वर्सेस ट्रंकेट। और जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप डिलीट यूज ज़्यादा करते हैं या ट्रंकेट करते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल सा बताइएगा कि डिलीट का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, बिकॉज कि क्योंकि हमको कुछ अननेसेसरी डेटा को रिमूव करना होता है, तो उस केस में हम डिलीट यूज़ करते हैं। ट्रंकेट यूज़ करते हैं कि जब हमको सारा टेबल डिलीट करना होता है, बट उसका जो है स्ट्रक्चर हमको रखना होता है। और ड्रॉप हम यूज़ करते हैं जब सब कुछ हमको हटाना होता है उस डेटाबेस से। ठीक है, तो ये एक ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, और जो है इंटरव्यूअर आपको समझेगा कि आपको एक लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत ही लाइक यूज़फुल थिंग्स होती है इंटरव्यू के टर्म में। ओके, सो ट्रंकेट की लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो ट्रंकेट की लिमिटेशन क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था एग्जाम्पल के थ्रू। सो ट्रंकेट कैन नॉट बी लाइक कैन नॉट ट्रंकेट टेबल इफ रेफरेंस बाय द फॉरेन की। So truncate is not going to like truncate the table if it is like a reference by the foreign key, but like it is present like a parent and child relationship in this case truncate is going to like a block. Okay, so whenever your table is presented in a like in a form of like a parents and child relationship in a like in a primary key and foreign key, in this case truncate is going to like a block, it's not going to execute, it's just going to throw the error. ओके, बिकॉज यहाँ पे कुछ जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है पहले से। तो ट्रंकेट का क्या है, जब ट्रंकेट का हम यूज करते हैं उस टेबल के लिए जहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की प्रेजेंट होती है, तो उस केस में हमारा जो है ट्रंकेट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो रन नहीं करता है। और इंटरव्यूअर आपको यहाँ पे फ्रेम कर सकता है, जब आपसे वो पूछेगा कि डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंट है, तो आप यही बताओगे जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया। लेकिन वो अगर थोड़ा सा डीप जाएगा और आपसे पूछेगा कि इफ़ वी हैव अ टेबल कॉल समथिंग लाइक अ स्टूडेंट, this is called the student table, and again is going to like a course, and both are connected, both are connected with the foreign key, with the foreign key and with the foreign key and primary की। सो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, आप बोलोगे हाँ हाँ हम तो डिलीट कर देंगे, सिंपल सा हमको क्या करना है डिलीट लगाना है और भेज देंगे। वो बोलेगा अच्छा हमको सारा डिलीट करना है, तो आप बोलोगे तो फिर क्या दिक्कत है, फिर हम ट्रंकेट लगाएंगे सब कुछ डिलीट कर देंगे। बट यहाँ पे आप जो है फंस जाओगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है जिसको हम जो है
फॉरेन और की के फॉरेन की और फॉरेन की और फॉरेन की और प्राइमरी की के रूप में यहाँ पे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो। आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंट है, क्या अगर कोई टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की प्रेजेंट है, यानी कि वो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में है टेबल, तो क्या हम ट्रंकेट का यूज कर सकते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर आना चाहिए बिग नो। ओके, till here everything is clear guys. So for that purpose we are just going to use delete child first और drop foreign key. So इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे या तो क्या करेंगे इसके लिए, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप बोलोगे एक बिग नो आप बोल दोगे, उसके बाद बोलता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज टू लाइक ए डिलीट टेबल। सो आपका आंसर होना चाहिए यस वी कैन डिलीट our child first or drop the foreign key constant from the table, then only we are able to delete that table. Okay, okay, so till here I think I am able to make you guys understand what are the things you should need to keep in mind when you are going to like an interview and the in term of real life. Okay, okay, so truncate limitation, as I explained before, what are the truncate limitation? If indexes view depend on table, truncate always fail, and SQL Server protect consistency and solution to use delete or indexes view. Okay, first. So this is the things you should need to keep it your mind. Okay. So now let's talk about something called the comparison of table. Now let me insert a table. Let me insert a slide actually here. So I'm just going to insert a blank slide here, and I'm just going to use my pen, and I'm just going to make you guys understand the topic in a better way so that everything is going to clear. So if till here everything is going to clear to you guys, just comment in a chat as everything is clear. If not, please let me know, and I believe that my voice and everything is clear. Okay, ओके तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमको देखना है कि जो है डिलीट ट्रंकेट और एंड ओके sorry for bad writing, and this is going to our delete, and this is our going to truncate, and this is going to our drop. Okay, so this is the things we should need to keep in mind. So okay, so always like a remove rows table all rows. So what is going to do when we need to like a remove something, so it's going to remove the rows, it's going to operation by row, and it's going to delete the all rows, and drop is also going to delete the your table as well. Okay, so this is the things first thing, and अगर हम in a term if we think in a term of remove. Okay, so first thing this, and we talk about the condition where, so it's allow yes, and it's not going to allow, so cross, and it is also not going to allow that. Okay, and identity reset, if we talk about the identity reset, so it's going to like a reset the identity. Okay, no, it's not going to reset the identity, it's going to reset the identity, and this is going to do nothing here. Okay, because our table is delete completely here in this case. And structured remain, if we talk about the structured, so it's going to remain the structure, it is also going to remain the structure, and it is going to delete all the things. Okay, and if we talk about the um, faster, which is faster, so our this is going to slower, and why I have explained. So this is also faster, and this is going to fast. Okay, so this is the things, and can roll back, this is the very important, can roll back. So in this case, in a delete section,
it is going to roll back, it is also going to roll back, and it is also going to roll back. So keep in mind these things, right, guys? I think I am able to make you guys understand. So always delete is going to like a remove data row by row and log each row deletion, and the slower for the large table. So that's why I introduced to you truncate. So for that purpose truncate come in the picture. So truncate come and remove all the pages and the minimum login and the very fast, right? So this is the things you should need to keep in mind. And again drop like a remove the metadata from the table, like from the your server, from your database, and the table definition, all the things is going to like a delete by using the drop function. So in a real world example, you can imagine like a bank transaction table. So in this case it's going to like a remove, it be like a want to like a remove one wrong transaction from the table. So for that purpose we need to use which what command we are going to use for that purpose. So for that purpose we are just going to use the delete command. And if we want to like clear the entire test data, for that purpose we are just going to use the truncate. And if we need to like remove entire old achieve table, so we just in this case going to use the drop. So now let's talk about some question which is called like a which command reset the identity. So please drop in the comment if you guys understand which command like a reset the identity. So our answer is going to truncate, okay? And which allow where's command. So if suppose if interviewer ask you which allows like a where command, so your answer is going to delete, right? And which remove the structure of the table, so your answer should be drop. And which is faster than delete and drop, delete and truncate, so it's going to truncate, okay? सो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मान लो आप जो है अगर मुझे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे। मान लो हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर से सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का जो डेटा है उसको डिलीट करना है, तो उसका जो है उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, डिलीट यूज़ करेंगे कि ट्रंकेट यूज़ करेंगे कि ड्रॉप यूज़ करेंगे। आंसर में बताइएगा। और अगर पूरा डेटा हमको क्लियर करना है बट टेबल चाहिए और टेबल स्ट्रक्चर चाहिए और टेबल चाहिए, तो क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर सारा टेबल ही हमको नहीं चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, एक बार आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ गोइंग टू लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टुडे सेशन, which is going to like a power like a delete remove the data and truncate clear the data fast, and drop is always destroy that table, okay. So delete is going to use for selective cleaning, and truncate is going to use for full cleaning, and drop is going to like a destruction mode, okay. So this is the things you should need to keep in mind. And suppose if you are in a like a in a relationship and there are some bonding going to like a not match, so in this case we are just going to remove that thing. So these are the things you should need to keep in mind, okay. So always remember delete is going to useful in this case when we need to delete the selected data only, okay. So these things you should need to keep in mind. And again one more important things come into the picture, which is when to use which. Many people confuse, and interviewer may ask you in an interview, hey, everything is going to fine, hey, everything is going to fine, but just let me know when to use which, when to use like when to use delete, when to use drop, and when to use truncate. So I'll make you guys understand the things in a better way. I'll try to make you guys understand with the some example and all the things. So, and also I have mentioned some useful things for delete, truncate, and delete. And this is a very useful topic in a term of like interview and in term of daily work life. So many people get like a rejection in this like a drop, truncate versus delete, okay. So
इंटरव्यूअर क्या करता है, आपसे पूछ लेगा कि डिलीट क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, और इस पे जो है बहुत से लोग जो है रिजेक्ट हुए हैं। आप पूछिएगा जो भी आपके साथ हैं और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता होगा कि क्या होता है जब आपको डीप नॉलेज नहीं होता है डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप का। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है और इंटरव्यूअर जो है आपको जज कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है आपको जो है कितना नॉलेज है डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप को लेके। तो इसलिए जो है हमने जो है आपको वन बाय वन सब कुछ डिटेल वे में बताया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और एक क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ कि कौन सा टेबल, कौन सा क्या कब यूज करते हैं, राइट। सो सपोज व्हेन यू वांट टू लाइक रिमूव वन स्पेसिफिक डेटा, फॉर दैट पर्पज यू यूज डिलीट। जब आपको कोई एक स्पेसिफिक डेटा को रिमूव करना है तो उस केस में आप जो है डिलीट का यूज करते हैं। एंड व्हेन यू लाइक क्लियर द इंटायर टेबल, सो इन दिस केस यू यूज़ द ट्रंकेट। जब आपको किसी टेबल के अंदर से सारा डेटा हटाना हो या क्लियर करना हो तो उस केस में आप ट्रंकेट का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर बना रहता है और उस टेबल में आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा से उसको जाके डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एंड थर्ड वन इज गोइंग टू लाइक अ यूजफुल, विच इज when we have to delete all the table with the structure and everything, but before drop you should need to take the backup also, because drop is going to destroy all the things, okay। सो गाइज आपको ड्रॉप यूज़ करने से पहले उसका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉप जाएगा तो सब कुछ जो है डिलीट कर देगा। सो टिल हेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू यूजफुल, ओके, everything is going to clear to you guys। Hi sir, okay, hi all, I think I am able to make you guys understand, and this is going to like a very useful topic for today's session. And till here we have covered a lot of things, and I believe you guys are doing the practice after the class also. So do practice, because without practice nothing is going to possible. And if you want to come into the like a data field, you should have to do practice, okay. So because if you want to like learn swimming, so you should have to jump in the pool, okay. If you want to learn drive the car, so you should have to learn you should have to drive that car, okay. Suppose you want to go from one place to another, so you should have to like take that action, so for that only you should have to do practice, okay। so अगर आपको सच में डेटा से रिलेटेड जॉब लेना है, या सच सच में आप मोटिवेटेड, सच में आप उस जॉब को लेने के लिए आपके अंदर जुनून है, तो आपको सिर्फ जुनून से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो टिल हेयर आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई बिलीव यू गाइज आर doing the things great, and you enjoyed my session, and drop your feedback also in the session, in the comment section, so that I can improve if anything is not going to clear to you guys। and also I have स्ट्रक्चर द थिंग्स कि जो है अगर कोई डाउट होता है आप लोग को, तो हम वीक में जो है डाउट सेशन भी ले लेंगे, ओके। सो टिल हेयर एवरीथिंग इज done from my side, and I just want to announce one more thing. Tomorrow class is going to cancel because of some my personal reason. Actually guys, I am full time working guy, so I have lot of responsibility along with this also, and I also like have some another work, so kindly keep in mind I have mentioned all the things in a detail base। so आपको जो है बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है ऑलमोस्ट इंटरव्यू में। तो आपको ये अगर पता होगा तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम देख रहे होंगे कि ग्रुप बाई क्या होता है, एडवांस फिल्टरिंग क्या होती है, उसके साथ साथ हम बहुत से जो है एडवांस टॉपिक को देख रहे होंगे, ठीक है। टिल हेयर everything is clear guys, okay। so now I am just going to end up the session for today, and let's meet again at 8 p.m. and do one thing, try join the group, WhatsApp group, and because I'll share all the things in a group, and notes and all the things I'm just going to upload my GitHub, and my GitHub repository link is presented in the description, so do and go there and take that notes as well, okay।
सो टिल हेयर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो